राइट? पार्किंसन डिजीज हो गया, हंटिंगटन डिसऑर्डर हो गया, अल्जाइमर डिजीज, राइट? तो यहाँ पे भी हम पार्किंसन डिजीज की जब बात करते हैं तो स्ट्राइटम लॉस हो जाता है। स्ट्राइटम में जो है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डोपामिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो जो डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है दैट इज बिकॉज़ ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर आर सब्सटेंशियल नाइग्रा पास कॉन्टैक्ट। ओके, तो वैसे ही जब हम सिलेक्टिवली न्यूरोट्रॉपिक वायरस ब्रेन में जाता है तो वो किसी ब्रेन पार्ट में जाके उस न्यूरोनल डिजेनरेशन को, तो हमें इसके बारे में जानना है कि मेरा जो फील्ड ऑफ वर्क है वो इसी फील्ड में है कि जो वायरसेस है सिलेक्टिवली, जैसे हम हब्स दूसर वायरस की बात करते हैं या यहाँ पे मैं भूल गया हूँ पेटेरोवायरसेस है, देन रेबीज है, देन रूबेला वायरस है, हब्स दूसर वायरस है। तो मेरा फील्ड ऑफ वर्क जो है मोस्टली जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस है एंड डेंगू है, राइट? तो ये क्या करते हैं कि ये सिलेक्टिवली किसी एक पाथवे के थ्रू से ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं और वो ब्रेन के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हैंडल करते हैं, जिसके वजह से न्यूरोनल नेटवर्क में जो इंटरकनेक्शंस है वो काम नहीं कर पाते। तो मैं उसको बताने के लिए ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, देन इनेट इम्यूनिटी है एंड देन इंट्रिंसिक इम्यूनिटी। तो जब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं इट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आज वी नो दैट इज बी सेल्स एंड टी सेल्स की बात हम करते हैं। तो वायरस अगर बी सेल टी सेल को अगर इंटरफेयर करता है तो आपके एंटीबॉडी सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो वो सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज अगर फॉर्मेशन नहीं होते हैं देन दैट विल कॉज साइटोटॉक्सिक एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट टू द बॉडी। जब उसके अंदर और जाते हैं, वायरस अभी जो है सिर्फ ब्लड सेल्स में है और अंदर नहीं गया है। जब हम पर्टिकुलरली कोई टिश्यू के अंदर गया, जैसे कि हम बात करें कि ब्रेन, तो टिश्यू में जब जाता है तब हम उसको बोलते हैं इनेट सिस्टम। तो इसमें साइटोकाइन्स मोस्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको मिमिक करते हुए वायरस जो है उस मैकेनिज्म में एंटर करता है टिश्यूज में। तो वो जो वायरस किसी भी रिसेप्टर के थ्रू से किसी भी एरिया के अंदर एंटर करने का जो प्रोसेस है वो हमारा जो होता है वो जीन सिमिलरिटी है, या हम उसको बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड सिमिलरिटी। तो जो वायरस है, वायरस का जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है उसका कोई पोर्शन ह्यूमन होस्ट सेल का या होस्ट का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसका जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर मैच करता है तभी जाके वो इजीली एंटर कर सकते हैं एंड देन दैट विल कॉज सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन द फिजियोलॉजिकल टर्म्स, राइट? तो अगर हम सेल की बात करें तो भी उसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, स्पेशली जब हम इंटरफेरन अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं। इंटरफेरन गामा की हम बात करते हैं। इंटरफेरन गामा जो है वो टिश्यू के अंदर एंटर होने के लिए मोस्टली रिस्पांसिबल होता है और इंटरफेरन अल्फा बीटा जो है वो स्पेसिफिकली सेल के अंदर एंटर होने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो जितना भी ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, एंटीवायरल ड्रग डेवलपमेंट की तरफ हम बात करते हैं तो ये इंटरफेरन गामा एंड इंटरफेरन अल्फा बीटा को टारगेट करते हुए ड्रग डेवलपमेंट किया जाता है। तो अब मैं इसके बारे में इसीलिए बताया कि देयर आर नंबर ऑफ फाइटोमेडिसिन्स आर देयर जो कि रिपोर्ट होता है कि ये एंटीवायरल है, मगर इसका इफेक्टिवनेस या इसका जो टारगेटेड ओरिएंटेड है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस चीज को जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। कैन आई एक्सपेक्ट दिस? तो ये एक मैं सिंपल एक एग्जांपल सेट करने के लिए बताया था कि एक मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रीटमेंट प्रेडिक्शन मॉडल यूजिंग होल जीनोम वेरिएंट ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ये कैसे होता है, वेट एनालिसिस, ड्राई एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग का रोल क्या होता है, और अल्टीमेटली इट प्रेडिक्ट कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कितना जो ड्रग है कितना इफेक्टिव है या नहीं है, राइट? कैन आई एक्सप्लेन दिस? वैसे ही और एक चीज मैं बताया कि जो एनिमल वायरसेस है, जो हम जूनोटिक वायरसेस की बात करते हैं, हम बहुत सारे पेट एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं। डू नो दैट कि दोस पेट एनिमल्स may cause several kind of infectious disease to us? रखना ठीक है। पहले जमाने में
घर में कोई डॉग नहीं रखते, मगर रखते थे क्या, गाय। उसको भी घर के अंदर नहीं रखते, उसके लिए प्लेस था। बर्ड को भी खाना दिया जाता था, मगर घर के अंदर नहीं रखते थे, आंगन में उसको रखते थे, क्या बोलते, पैरट। तो ये जो चीज है, पहले जमाने में जो चीज था और हमारे इंडियन सिस्टम में था, ये चीज, उसको हम नेग्लेक्ट किए हैं। लोग हमें इस चीज को समझाने लगे कि ये जो चीज कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और हमने उस बात को मान लिया। ठीक है, तो ये भी आपको प्रेडिक्शन दे सकता है कि जितने वायरसेस हैं जो कि हमारे पेट एनिमल्स पर अफेक्ट होते हैं, वो धीरे धीरे फिर हमें भी अफेक्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सब कोई जानते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये कॉग्निटिव एजेंट है, बट देयर इज अनदर क्लास ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम एवियम पाराट्यूबरकुलोसिस। मैप, ये जो मैप है ये क्या करता है, ये डायरिया कॉज करता है, और स्पेशली इसका जो रिजर्वर है, जो यहाँ पे ग्रो होकर स्टोर होकर रहता है, वो पिग मोस्टली। तो जहाँ पे पिग फार्मिंग जहाँ पे होती है, तो वहां पे जो और लोग रहते हैं ह्यूमन, उनको डायरिया सिम्टम्स ज्यादा स्पेशली आती है। तो वहां पे वैक्सीन डेवलपमेंट सही तरीके से हो नहीं पाता है। वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये सब फील्ड में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, राइट? कैन आई नेक्स्ट? तो मैं अभी कोविड के बारे में बात कर रहा था। जैसे कोविड में आप देख सकते हो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में भी हम मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं, whether it is image processing, whether it is drug selection or kind of biomarker development, right? Hello. So this is all about immunity to virus infection, immunoregulations है, then mucosal immunity है, then host genetics है। So मैं इसका ज्यादा डिटेल में, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक दिन लग सकता है, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि there are lot of scope in the field of viral infection की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे और भी डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे कि मशीन लर्निंग का काफी रोल हो सकता है। हाँ, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा लैब है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, और स्पेशली मेरा फील्ड जो है न्यूरो वायरोलॉजी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वायरस का एंटीवायरल एक्टिविटी चेक करते हैं, और इन सिलिको स्टडी भी होती है, इन विट्रो स्टडी भी होती है, एंड एनिमल स्टडी भी हम लोग करते हैं। और I think one drug has already completed all the stages, and it is on the verge of filing patent. So जो भी कोई इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए फर्दर, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो भी यंग जनरेशन है, आप अगर इंटरेस्टेड हो न्यूरोवायरोलॉजी में वर्क करने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय लैब, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, sir. Now I request Dr. Vikramdeep Monga to felicitate Dr. Devapriya and address the gathering with a few highlights of the session. Thank you, sir. Now I would like to call upon Assistant Professor Ms. Diksha Chandel from Paramedical Sciences to further proceed. Now I would like to introduce our second session chair member of this session, Dr. Sonia Dhiman. Dr. Sonia Dhiman currently holds the position of Professor in Pharmaceutics and Head Pharmaceutical Regulatory Affairs at Chitkara College of Pharmacy, Chitkara University, Punjab.
She earned her master's in pharmaceutics from Kurukshetra University, Haryana, and PhD in pharmaceutical sciences from Maharishi Markandeshwar University, Maulana, Haryana. Dr. Dhiman has been involved in teaching, research, mentoring, advising, and administration during the past 14 years. She is actively involved in the field of drug delivery and regulatory science. Her area of interest includes novel drug delivery systems, nanocarriers, modification of polymers, and quality by design. She is supervising scientific research at the post-graduation and the doctoral level. Ma'am has written 2 books and has contributed 7 invited book chapters on controlled and novel drug delivery systems in edited books of reputed Indian and international publishers. She has published a total of 37 publications in various international and national journals of repute. She has an H index of 15 and more than 779 citations to her credit as per Google Scholar. Ma'am has delivered several invited lectures in various conferences and seminars. Also, she has presented papers in various national and international seminars and workshops. Now, I would like to request Dr. Sonia Dhiman ma'am to introduce our keynote speaker of this session, Dr. Jitendra Singh, Professor, Chitkara University. Good afternoon, everyone. Thank you, Ms. Diksha, for a nice introduction. First of all, I want to express my gratitude towards Quantum University and the organizer of the conference for inviting me here and giving me an opportunity to chair the session. Without wasting a moment, I would like to introduce our next speaker of the day, Professor Dr. Jitendra Singh, Principal, IIT University, Bhadal, Punjab. Professor Dr. Jitendra Singh has done his B Pharmacy and M Pharmacy from Kurukshetra University, Haryana, and PhD from UIPS, Punjab University, Chandigarh. He is currently working as principal at Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhadal, District Roper, Punjab. Previously, he has worked as assistant professor at Sachdeva College of Pharmacy, Mohali, Punjab, and associate professor at Chandigarh University, Mohali, Punjab. Apart from this, he has also worked in Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh as Dean of School of Pharmacy. Also, he has worked in IEC University, Himachal Pradesh as Professor and Dean of IEC School of Pharmacy and has also served as Vice Chancellor of the University. Mr. and Professor Jitendra Singh has published 29 research papers, 11 book chapters, and also edited 3 books. He has supervised 3 PhD candidates and has an H index of 9. He also has 390 citations to his credit. The major research interest of Professor Jitendra Singh is clinical research on experimental animals for pharmacological evaluation of drugs, especially drugs and areas like anti-anxiety, anti-fertility, anti-epileptic, and antimicrobials. Research pertaining to natural products like extractions, isolation, purification, quantification of bioactive molecules from crude drugs, especially plant-derived drugs. Also, he has worked on the areas related with monograph development for plant drugs and chromatographic studies. Also, his area of interest is analytical method development of various bioactive markers. Apart from this, Professor Jitendra Singh has been awarded as Academic Excellence Award in National Conference organized by IPGA Uttarakhand branch at Haridwar in 2021. Also, Professor Jitendra Singh
has been a recipient of University Best Teacher Award by Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh. Also, he has received University Best Teen Award by Career Point University, Hamirpur, Himachal Pradesh. He has also received Presidential Appreciation Award 2020 by Society for Community Mobilization for Sustainable Development, New Delhi. Also, he has received Research Fellowship in Science for Meritorious Students from University Grants Commission, New Delhi. He is also actively engaged in Board of Studies, Academic Council, and Institution Animal Ethical Committee as Chairman, Member of Board of Management at various universities level. I would request Professor Dr. Jitendra Singh to please come on the dais to share his words of wisdom on the talk. Now I request Dr. Vikramdeep Monga to felicitate Dr. Devapriya. Sir, please. Now I request Dr. Sonia Diman to felicitate Dr. Jitendra Singh. Now I will request Dr. Himanshu Chaurasia sir to felicitate Dr. Vikramdeep Monga sir with the memento. I would request Dr. Ravi Upadhyay sir to felicitate Dr. Sonia Diman ma'am. Thank you, sir. Dr. Jitendra sir is requested to address the gathering. Thank you, especially Dr. Sonia. Very good afternoon. क्योंकि लंच टाइम है, ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं. So since morning, the inaugural session, we have been discussed about the artificial intelligence, that is AI in short. So in this intelligence or concept of artificial intelligence, nothing is artificial. The data, the information, the output, and the next utilization of that information all are genuine and valuable. So keeping in mind that why it is essential nowadays, the research has been gone since the time back, and no doubt the research with the minimum use of AI has been create wonders. Can you have please slide? Move to the third last. Yeah. Yes. Right. This is my conclusive slide. I want to discuss it in the beginning and at the end also.
So, artificial intelligence is the utilization of the data and to solve the problem, to fasten the process, and to provide the researchers and the users a best solution using the computerized machines, using the engineering technology. So, artificial intelligence is the robotic application which is made by the human and is for the replacement of the human intelligence. So, no doubt, without human mind, without human knowledge, it can work. But artificial intelligence is required to be in the right hands. Otherwise, it can be cause disaster. So in my topic, that how artificial intelligence can be applied in the natural product research. Natural products are the natural resources which are therapeutically important, which have therapeutical significance. So in the research of natural product, the three concepts. First is artificial intelligence speed up any process. The second is accuracy. The third is quality. And the fourth, you can say, it's robustness. But all these first qualities of AI are effective only if the data feed to the machine, to the system is correct. And the information, the analogs are up to the standards. So in this, you can say, see that robotic application, which is the main concept of this artificial intelligence, that without the use of human minds, without the use of active human minds, the high throughput screening, by high throughput screening, one can analyze a number of samples, hundreds or thousands of samples in a minimum time of spent. Might be this. This is my final slide, and within 5 or 10 minutes we will end up this. So high throughput screening. In earlier, what researchers do when these computerized techniques are not available or partially available, then one sample in laboratory to be synthesized or isolated, whatever is being synthesized in the laboratory or isolated from the natural sources, or any sample derived from any source which to be analyzed, and that individual sample is difficult to analyze for a particular therapeutic effect, pharmacological effect. So the high throughput screening solves that problem. It gives the result in a parts of the minutes or seconds. So the large number of data, large number of samples can be analyzed by using this high throughput screening especially for the microbial assays or anti-cancer drugs. In this next slide, you can say that the CAD, computer-aided drug design. So by using this technique, by using the methods of computer and the data analogs, one can easily find out the efficacy of any molecule virtually. So it is basically used in the in silico techniques. When a researcher just conceptualize any drug molecule or a number of drug molecules, and it is not required to synthesize all the molecules in the lab.
just structures of that molecule can be analyzed for their efficacy, for their toxicity, for their pharmacokinetic effects. So, if the hits or the lead molecules generated from that study, then that molecule can be really synthesized in the lab and can be proceed for the in vivo experimentations in animals. So that molecule can be further converted into the form of real drug molecules or the drug development process. And finally can be industrialized after the verification of the clinical trials, approval of clinical trials. The next slide, next picture, it is the use of data to analyze the drug compounds. By putting the number of data of any spectroscopic methodology, spectroscopic techniques like UV, NMR, IR, mass spectroscopy. So by analyzing any sample, that sample can be easily identified by using this robotic technique, this software of machines. So first slide एक बार थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं. Second. So let me clear, as I said, it is the creation of human intelligence to replace the human working, artificial intelligence, and it involves different segments, all segments of engineering, mathematics and statistical analysis, and the human mind to conceptualize all these, to arrange all this knowledge into a meaningful way. Artificial intelligence is a tool which ensures the efficacy, quality, reproducibility, robustness, and precision, as I discussed. Next slide, please. Yeah, we have discussed this. Next, please. Yeah. With minimum use of artificial intelligence, the researchers worldwide who work on the natural product research isolated very potential molecules. And in the era and the coming era, by using the artificial intelligence, it is expected that a number of more creations, number of more such bioactive molecules can be isolated, generated, or can be derived, and their derivatives can also be converted into a good biomolecule drug. Next, please. Yeah, we have discussed this. Next. Yeah. Artificial intelligence data analysis, as we have discussed, by using the data information, one can easily analyze any compound by giving the input of the sample spectroscopic and chromatographic studies. Next, please. Yes, please. Next. I think all. Any question, any doubt, please? Sir, as you can see that AI are used in producing in computer-aided drug design. So can AI in certain future can itself design any drug molecule and completely remove the human need of a human mind? And today's knowledge system, it's certainly no, because in drug design there are huge number of steps which need to apply human mind. If artificial intelligence is
a technique which give you the idea or the which give you the suggestion actually. If the human mind or the scientist who want to who must take the decision that whether it is required to select or take the conclusive decision of that prediction. So certainly, if the human mind which decide that prediction of that technique. Sir, in artificial intelligence, what are the challenges in the future and what are the regulations required in the AI? Challenges, certainly the manpower. The government should make the regulatory makeup and the practices as well, because in India, we need to improve the employability and the use of artificial intelligence of the computerized techniques reduces the employability, cost of employability. Although this technique is more accurate as compared to the human mind in pharmaceutical sector. When a tablet manufactured and in a compression machine and was manually designed manually shortlisted by the chemist, production chemist, there were many chances of error. But in nowadays, there are machines which are shortly each and every tablet on the basis of the data feed, the limits given to the machine that this weight must be required for a good quality tablet. So at that earlier time when it was manual, then certainly the number of chemists are required. But if machines are working in this way, then the manpower is a major chance for challenge for any country. As far as your next question, that is regulatory. Although there are many regulations in all countries, but it is required to be give awareness to the public, to the scientists, and to use that information for the human growth and sustainable development. As you were talking about high throughput screening and high throughput screening, and we talked about also the steps, that there are a lot of steps in the drug discovery and development process. At least in the lead optimization, like there is a molecule pool and then lead optimization happens and the lead molecule is taken out. And then we can further talk about do you think lead optimization step can be helpful? Because a lot of manpower is wasted. Can we use AI in creating a model that helps in lead optimization? It's being using lead optimization by use of artificial intelligence is already in the process. Researchers to use that. When you software सुना होगा chemistry में बहुत common use होता है. Ligand and binding interaction decide कर देती है कि एक रिसर्चर ने केमिस्ट्री लैब में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100 molecules किए हैं by using any chemistry. तो 100 को synthesize करने की जरूरत नहीं है. तो उसको इन सिलिको मेथोडोलॉजी से के द्वारा आप उनकी रिसेप्टर के साथ कितनी कंपैटिबिलिटी है उसके बेस पे लीड को सेलेक्ट करके सिर्फ उसी मॉलिक्यूल को फिर से डिसाइड करके और नेक्स्ट लेवल पे एनिमल एक्सपेरिमेंट पे ले जाएंगे.
तो ऐसा हो रहा है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से अच्छा ठीक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोलॉजी मेडिकल तो बायोलॉजिकल use of medical engineering in the biological processes like in one lecture we Alisa उसको number of samples उसपे एनालाइज किए जा सकते हैं in part of some largely biochemists ने रिसर्च किया है इसी तरीके से नंबर ऑफ जो टेक्निक्स हैं जो चाहे वो ब्लड सैंपल की लगाने से या इलेक्ट्रॉनिक वॉच की बात हुई थी नहीं जो बॉडी के कौन सा पैरामीटर्स देखते हैं उसकी बात हुई थी नहीं सीटी स्कैन मशीन है उसकी जो एक हॉस्पिटल्स में डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं तो बायोमेडिकल में एआई तो अभी भी जो है और आगे उसके ऑप्शन और it is also required क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उस प्रकार के सॉल्यूशंस की बाकी वो नहीं समझ में खुद पढ़ना थैंक यू Thank you, sir, for your valuable speech. Now, I would like to request everyone to proceed for the lunch at BTech Seminar Hall and the volunteers to please accompany our dignitaries to the venue. I also request everyone present here to please gather here again for plenary session 2 at 2:30. An important note for all the participants: after the lunch, oral presentation in offline mode will be conducted at Health Science Department, room number B008, B009, and B010 at ground floor, and the poster presentation in offline mode will be conducted at room number C307, third floor. And the oral presentation in online mode will be conducted at B111, and poster presentation in online mode will be conducted at Health Science Department. Thank you everyone for your valuable time and attention. Now you may proceed for the lunch.